Good evening, everybody. We are dealing about biomolecules. Biomolecules, especially carbohydrate, polyhydroxyaldehydes and polyhydroxyketones, which on hydrolysis gives same compound. After that, we have seen classification of carbohydrate, then preparation from glucose, preparation of glucose from sucrose and starch. Next to that, structure of glucose. Actually, it is expected that glucose having the open chain structure, which is called as the Fischer projection formula. But many of the properties which were not shown by the open chain structure, and therefore it is observed that glucose exists in a ring structure. Conversion of open chain structure into ring structure is a conversion from Fischer projection formula into Haber's formula. So there is a linkage between C1 and C5. This linkage is called as the glucosidic linkage, and due to that the cycle is octet. This cycle consists of 5 carbon and 1 oxygen. That means total 6 ring compound is there. 6 atoms present in that ring, and this is about the structure of the pyran. Like this. 6 membered. Out of that there are 5 carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5 and 1 oxygen atom, and therefore structure may exist in the form of ring structure. Now there are again 2 possibilities in the form of anomers, alpha and beta. Alpha anomer and beta anomer, they are different only in the configuration of OH at a C1 carbon atom. Like this. Now today we have to study the structure of fructose. How fructose exists. Again, similar to that of glucose, fructose also exists in a ring structure. Fructose, which is a leo-rotatory and ketohexose. Glucose is called as aldohexose because it contains 6 carbon atom and aldehyde group. But fructose is called as ketohexose. 6 carbon atom and ketonic group is there, and it is a leo-rotatory. It has tendency to deflect equal towards the left side. Therefore, leo-rotatory, and rotation is minus 92.4, while glucose is a dextro-rotatory, and therefore glucose has another name, dextrose. Rotation is a minus 52.7 degree, plus 52.7 degree for glucose. Here minus 92.4. This is for fructose. That means it is leo-rotatory, and therefore it is also called as levulose. Another name for fructose is a levulose. जैसे ग्लूकोज का दूसरा नाम था डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज. नाउ लियो रोटेटरी फ्रुक्टोज इज कॉल्ड एज द लेवलोज. Then it is one of the reducing sugar. It has tendency to reduce tolerance reagent Fehling solution like this. Therefore, it is called as reducing sugar. Then in combined state it exists in the form of fructofuranose ring structure. जैसे ग्लूकोज को exist किए थे अपन ने. Yes, glucose exists in the form of glucopyranose. Now fructose exists in the form of fructofuranose. इसलिए इसको फ्यूरान के साथ कंपेयर किया गया है. फ्यूरान मतलब क्या, तो 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट, 5 मेंबर्ड रिंग. ये पायरन था. पायरन, इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. हियर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, दैट मींस 5 मेंबर्ड रिंग. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरान. फ्यूरान को कंपेयर किया गया है फ्रुक्टोज के साथ. So let us see the structure of the fructose. How fructose exists? Open chain structure for CH2H, C double bond O, then C OH H, again C4H OH, then again HOH, and last में CH2OH. First, second, third, fourth, fifth, and sixth carbon atom. So this is the ketonic group, right? C double bond O group is called as ketonic group. This is the open chain structure of the fructose. Middle one is a open chain structure, but it is observed that C2 and C5 get linked together by a glucosidic linkage. Now there is a glucosidic linkage similar to that of glucose. In glucose there is a glucosidic linkage between C1 and C5. But in fructose there is no linkage between C1 and C5, but there is linkage between C2 and C5. Because here ketonic group present on second carbon. ग्लूकोज में aldehyde group present on first carbon, इसलिए first के साथ हुआ था, इधर second के साथ में है. This is original structure. Now see what happened. This hydrogen get transferred to the oxygen, and therefore this double bond O is converted into single bond OH. Double bond O converted into single bond OH. Now this oxygen atom connects second and fifth carbon atom. Second and
fifth. These carbon atoms are connected by means of oxygen. That means only 5-membered ring, 1, 2, 3, 4, and middle oxygen is present. That means 5-membered ring. First carbon जो है CH2H that present on the second carbon. मतलब ये स्ट्रक्चर देखो, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस. माइनस इसलिए कि ये लियो रोटेटरी है, ग्लूकोज में अपन ने प्लस यूज किया था क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था. अभी देखो ये स्ट्रक्चर को अपन ने कैसे लिखा है, सेम इसका ही स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में ये है. अब ऐसा क्यों बना है, देखो ये CH2H जो कहां पर है, तो सेकंड नंबर के कार्बन पर. तो ये सेकंड नंबर का कार्बन, कंसीडर दिस वन. ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, CH2H, इसको इधर डाल दिया, और ये डबल बॉन्ड O था तो उसको कर दिया सिंगल बॉन्ड OH, राइट. सो दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकंड कार्बन, फर्स्ट सेकंड. नाउ थर्ड एज इट इज HOH, अगेन HOH, फोर्थ अगेन सेम OH जैसा है वैसे. फिफ्थ वाला H रहेगा, CH2H रहेगा. कौन सा नहीं रहेगा, तो यहाँ का H चला गया. कहाँ चला गया, तो डबल बॉन्ड O की तरफ, और उसका क्या हो गया, तो सिंगल बॉन्ड OH. अब H गया, बचा क्या, ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन ने किसको कनेक्ट किया, तो ये कार्बन को कनेक्ट किया. दैट मींस सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन एटम गेट कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ऑक्सीजन लिंकेज व्हिच इज कॉल्ड एज द ग्लूकोसाइडिक लिंकेज. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस. Now same anomeric form is there which is called as the beta. बीटा में क्या होगा, तो सेकंड वाला जो है वो देखो OH यहाँ पर इधर साइड में था, उसको पोजीशन चेंज कर दो. वैसे भी अपन एनोमर्स को बोले थे कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्टिकुलर चिरल कार्बन आइटम. सो हियर CH2OH जो है वो अभी राइट साइड में गया और OH लेफ्ट साइड में. रिमेनिंग ग्रुप्स रिमेन सेम. देखो OH HOH, ठीक है, HCH2OH. That means two possible structures are obtained. Again, they are anomers of each other, but they are C2 anomer. In glucose, they are C1 anomers. So this is the open chain structure, and these are the ring structure. Closed ring. Ring get connected by C2 and C5 with oxygen. Again C2 and C5 with oxygen atom. So first केस में क्या है, अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या है, तो अल्फा में OH राइट साइड में है, बीटा में OH लेफ्ट साइड में.